with respect to brain. अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. फोर ब्रेन का 3 पार्ट. नंबर 1 olfactory lobe, number 2 cerebrum, and number 3 diencephalon. याद है अभी तक. तो cerebral hemisphere और cerebrum we have completed. Different type of area, functions. Cerebral hemisphere are concerned with the voluntary activity, involuntary activity. Cerebral hemisphere or cerebrum is concerned with what? Voluntary activity. Cerebellum involuntary. Right? अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे डायनसेफेलन. डायनसेफेलन के अंदर 2 पार्ट आता है मोस्टली. एज पर एनसीईआरटी हम लोग सीधा जाएंगे थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, बट एपिथैलेमस इज आल्सो कम्स अंडर द डायनसेफेलन. एपिथैलेमस नेक्स्ट है थैलेमस, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस. तो थैलेमस का रूफ कौन है, बेस कौन है, हाइपोथैलेमस. समझ में आ गया. अब यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं डिस्कशन कर. फर्स्ट हम लोग आते हैं थैलेमस. तो पहले हेडिंग करते हैं डायनसेफेलन. So under the diencephalon, first is thalamus. थैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं, ना रिले सेंटर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिले सेंटर? जो कम्युनिकेट करता है. तो क्योंकि ये कम्युनिकेट करता है इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज गेट कीपर ऑफ कॉन्शियसनेस. आप लिख सकते हैं दैट इज नॉट एनसीईआरटी बेस्ड, बट एनसीईआरटी बेस्ड यही है कि रिले सेंटर ऑफ ब्रेन एज इट कम्युनिकेट sensory and motor signal. The sensory and motor signal को ये communicate करता है, so it is called as relay center of the brain. आप चाहे तो लिख सकते हैं कि also called gatekeeper of consciousness. Next we are coming to thalamus. Sorry, hypothalamus. टिश्यू चैप्टर याद करिए, हम लोग पढ़े थे हाइपोथैलेमस इज द ओनली व्हिच कंटेन्स द न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. याद आया? स्ट्रेट टू द पॉइंट में आते हैं. It is present at the base of thalamus. Act as
Hormoregulatory center. Hormoregulatory center or thermostat of body. Second is it is with neurosecretory cell. And secretes neurohormone. We will discuss on the chemical control and coordination just after this chapter. The neurohormone is of two different types, releasing hormone and inhibiting hormone. And these releasing hormone and inhibiting hormone secreted from the hypothalamus passes through what? That is passes through portal vein to reach the anterior pituitary. And they ultimately control what? The hormone secreting from the anterior pituitary. That is why it is the link between nervous and endocrine system. So it acts as a link between the nervous and endocrine system as it is secreting the neurohormones to control the anterior pituitary. बहुत important है. Next, hypothalamus is a very major center which concerned with the different areas. देखो आप लोग normally जानते हैं कि medulla oblongata is concerned with what? Vasomotor center. What is the meaning of vasomotor center? Now that is concerned with the respiratory center plus cardiovascular center, togetherly called as vasomotor center. Apart from the respiratory center, cardiovascular center, vomiting center, which is present in the medulla. बाकी जितने भी सेंटर है कहाँ है? हाइपोथैलेमस में. ऑलरेडी मैं बोल दिया थर्मोरेगुलेटरी सेंटर प्लस also with trust center, hunger center, satiety center, it control the involuntary activities. तो हाइपोथैलेमस वॉलंटरी रोल नहीं है, इनवॉलंटरी. जैसे कि आप लोग देखें जितने भी एग्जांपल आप देख चुके हैं, ट्रस्ट, हंगर, सैटिस्फैक्शन, ये सब वॉलंटरी नहीं, सिर्फ क्या है? इनवॉलंटरी. So this is also control the involuntary activities. It also control the emotional activities. Emotional or human behavior. इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम. हम लोग जस्ट देखेंगे लिम्बिक सिस्टम के बारे में. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम. तो लिम्बिक सिस्टम दैट विच कंट्रोल द इमोशन. लिम्बिक सिस्टम के अंदर जितना स्ट्रक्चर आएगा सारे के सारे किसके साथ रिलेटेड है? इमोशनल के साथ रिलेटेड है. सो व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस? It also control rage, anger, fear,
So that is love, hate, sexual desire. सेक्सुअल डिजायर को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लिबिडो. Male libido towards female and female libido towards male. That is called as sexual behavior or sexual desire. तो ये जो sexual behavior है and all these emotional activities related है, that is why it is a part of the limbic system. हम लोग फटाक से गुस्से हो जाते हैं, किसी के तरफ थोड़ा सा सॉफ्ट कर्नर आ जाता है, ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है कि दैट इज बाय द हाइपोथैलेमस. ठीक है. इन जनरल बिहेवियर जो इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, इमोशन के साथ अटैच है, ऑल आर कम्स अंडर द हाइपोथैलेमस. इट आल्सो कंट्रोल द यूरिन आउट. मतलब यूरिन का क्वांटिटी को भी ये कंट्रोल करता है. ये आपका एंडोक्राइन चैप्टर में आ जाएगा ये पार्ट. कंप्लीट है. Now we are coming to the next part, limbic system. Limbic system is also called emotional brain. Called as emotional brain. Three main part which comes under the limbic system are hypothalamus, amygdala, and hippocampus. These are the three parts which comes under the mainly under the limbic system. It also include cerebrum, then septal nuclei, mammillary body, then fornix, septal nuclei तो हो गया fornix, then olfactory bulb, etc. तो दिया सेकेंडरी पार्ट. खाली मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, आप इसको चाहे तो भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेनली ये तीन पार्ट याद रखना है, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला, हिप्पोकैम्पस. So now we are coming to the function related to all these three. पहले आते हैं हाइपोथैलेमस. मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ हाइपोथैलेमस के फंक्शन के बारे में, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए हाइपोथैलेमस का फंक्शन लिखिए, रेगुलेट द ह्यूमन बिहेवियर, regulate the human behavior like sexual behavior, sexual behavior, expression of emotional reaction, like your excitement, pleasure,
rage, fear, etc. And also motivation. So hypothalamus का बहुत सारा फंक्शन हम लोग डिस्कशन किए, बट द फंक्शन रिलेटेड टू लिम्बिक सिस्टम इज इमोशनल एक्टिविटी. देखिए ये सब एग्जांपल जो मैंने दिया ये सब इमोशनल एक्टिविटीज है. सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन, इमोशनल रिएक्शन, मोटिवेशन. नेक्स्ट द फंक्शन ऑफ हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस हमने प्रीवियस क्लास में ही पढ़ा था कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी एसेंशियल फॉर लर्निंग इज एसोसिएटेड विद व्हाट? हिप्पोकैम्पस. आप लोग कोई भी स्मेल को जैसे ही डिटेक्ट करते हैं तो आपको आपका पास्ट मेमोरी याद आ जाता है कि नहीं उस स्मेल रिलेटेड, कि ये स्मेल किस फूड का है, कि ये स्मेल की बैड है कि गुड है, कि किस सोर्स का है. तो हिप्पोकैम्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मिक्स दिस स्मेल विथ मेमोरी. तो स्मेल के साथ मेमोरी को ये कंट्रोल करता है. So deals with mixing of smell and memory. So it deals with the mixing of smell and memory, recall of an event, associated with memory. Recall of an event associated with memory and convert short term into long term. Essential for learning. Essential for learning. Now coming to the amygdala. Complete है क्या? So coming to the next page, amygdala. It is associated with rage, एंगर, फियर. ये मोस्टली फियर को ज्यादा कंट्रोल करता है, इसीलिए हम लोग एमेग्डाला को फियर सेंटर भी बोलते हैं. बहुत ज्यादा नहीं, दैट्स इट. तो दिस इज ऑल अबाउट द फोरब्रेन. फोरब्रेन हम लोग का कंप्लीट हो गया. इसमें हम लोग कंप्लीट किए 3 अलग अलग पार्ट, लाइक योर ऑल्फैक्टरी लोब्स. नंबर 2 इज योर दैट इज सेरेब्रम और सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एंड नंबर 3 इज डायनसेफेलन. डायनसेफेलन के रिलेटेड और भी कुछ है, जैसे कि ब्रेन वेंट्रिकल. आई विल डिस्कस विद द कंप्लीशन ऑफ द ब्रेन टॉपिक. जैसे ब्रेन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फिर हम ब्रेन वेंट्रिकल में फिर से रिटर्न करेंगे. वहां से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहता है हमेशा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेंट्रिकल इज प्रेजेंट पासेस और दैट इज प्रेजेंट नियर द मिड ब्रेन. हमेशा वो सेंटेंस रहता है एनसीईआरटी का, इसलिए उसको जरूरी है डिस्कशन करना. So we are coming to midbrain. Midbrain is derived from which embryonic tissue? Midbrain is derived from which embryonic tissue? अरे लिखा है तो था प्रीवियस क्लास में, भूल गए? अच्छा आप लोग तो क्लास ही नहीं किए थे, राइट? भूल गया था. आप लोग का फाइनल एग्जाम था नीट का, है ना? हाँ, तो इसलिए तो क्लास में एब्सेंट थे.
यस ना? आप लोग का फाइनल एग्जाम था ना प्रीवियस क्लास में, जो आप लोग एब्सेंट थे? आई थिंक सो। ऐसे फाइनल एग्जाम बहुत आएगा 4 महीने में, एब्सेंट रहना बढ़िया से। कीप इट अप। मिड ब्रेन is the smallest part of the brain. आदमी जो गलती करता है पास्ट में उससे सीखता है। आप लोग इतना एक्वेंटेड हो गए हो अपने पास्ट के साथ कि पास्ट को छोड़ने का मन ही नहीं करता। जो पास्ट में किए वो मेरा एक्सपीरियंस है सर, कैसे छोड़ सकते हैं? उस एक्सपीरियंस को तो आगे बढ़ाएंगे नहीं, उस एक्सपीरियंस से सीखेंगे कुछ नहीं, लेकिन उसको आगे बढ़ाएंगे। जो गलती किए थे सेम करेंगे, जो बुक पढ़े थे पिछले साल वही पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन किए थे वही करेंगे, जैसे फॉर्मेट में हम सोच रहे थे लिख रहे थे वही करेंगे, तो रिजल्ट भी वही आएगा। सीखे नहीं कुछ, अभी तक नहीं सीख रहे हो। ये क्लास एंड एग्जाम ये दोनों चलता रहेगा साइमल्टेनियसली। क्लास मिस कर करके, पिछले साल के कुछ स्टूडेंट यहाँ पे है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पिछले साल भी क्लास नहीं किए और फाइनली रिजल्ट हुआ 0। इस साल भी क्लास मिस कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम। अगर आपको क्लास नहीं करना था तो एडमिशन क्यों लिए भाई अननेसेसरी? The smallest part of the brain, that is almost 1%. एंड मिड ब्रेन के अंदर सिर्फ हम लोग एक ही चीज डिस्कशन करेंगे, एंड दैट इज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। याद रखिएगा ये जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर क्लास। सिर्फ मैमल्स में ही कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन एंड कंट्रोल visual reflex and auditory reflex. ऑडिटरी रिफ्लेक्स एंड विजुअल रिफ्लेक्स, ये दोनों रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन थ्रू कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। लेट्स सी। दिस इज एक्चुअली, एज आप डायग्राम से ही आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 लोब से कि 1 लोब है, यहाँ पे भी 2 लोब है कि 1 लोब है, एंड ये एक्चुअली बीच में देखो ट्रांसवर्सली थोड़ा सा इनर्वेट कर दिया है, एंड दैट इज व्हाई इट लुक्स लाइक 4 लूप्स, अपर टू लोअर टू। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वाड्री। अगर ये ऐसा होता then it is called as what? बाइजेमिना। लेकिन है क्या हम लोगों का? ट्रांसवर्सली इनर्वेट किया टू मिक्स द 4 loops, so called as corpora quadrigemina. This is a midbrain, and now these contain what? Not 2 upper lobe called as superior colliculi and second is inferior colliculi. Superior colliculi and inferior colliculi. Superior colliculi control visual reflex
and inferior colliculi control auditory reflex. Now see, we cannot rotate our head, that is eye. We cannot move our ear pinna. हम लोग आई को सिर्फ रोटेट कर सकते हैं विद इन दैट ऑर्बिट. वी कैनॉट मूव आवर आई, दैट इज कम आउट टू ऑर्बिट टू मूव लाइक जस्ट कैमिलियन जैसे मूव करता है. आप लोग देखे होंगे कैमिलियन का हेड एकदम फिक्स्ड रहता है, लेकिन अपना आई को एकदम पूरा 360 एंगल में, मतलब 180 डिग्री एंगल में मूव कर लेता है. उसको बिना हेड को मूव किए वो आराम से यहाँ तक पूरा देख सकता है, पूरा पीछे के साइड में भी देख सकता है. बिकॉज दे कैन मूव देयर ऑर्बिट, we can't. We just move our eyeball within that orbit. अगर आपको पीछे देखना है, साइड में देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेड को रोटेट करना पड़ेगा. Yes or no? Means head muscles and eye muscles are interconnected, and that is under the control of what? Superior colliculi. So superior colliculi controlling the visual reflex by controlling simultaneously the muscles coming from the eyeball and neck. Same to same. Supposed to be somebody is calling from backside, somebody is making some noise. तो मुझे देखना है पीछे में क्या आवाज हो रहा है, सुनना है. तो क्लियर सुनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? हेड को रोटेट करना पड़ेगा. मीन्स ईयर का जो इंपल्स है एंड नेक मसल्स का जो इंपल्स है, दोनों को कंट्रोल एक साथ कौन करता है? इंफीरियर कॉलिक्यूल. दैट इज बाय दैट कंट्रोल व्हाट? ना ऑडिटरी रिफ्लेक्स. समझ में आ गया? सो राइट, receive sensory impulse from eye and head muscle. Neck muscles लिख सकते हैं. वैसे नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं receive sensory impulse from ear and neck muscle. This is all about midbrain. Midbrain में इतना ही डिस्कशन करना है, इससे ज्यादा नहीं. Complete. So we are coming to the hindbrain. Hindbrain. Why it is called as hindbrain? And why that is called as forebrain? Forebrain because it is coming, or mostly the part of the forebrain is present in the front side. Anterior side की posterior side? Anterior. तो ये किस side में है? Posterior side. That is why it is called as hindbrain. And in between that it is called the mid. So is present posterior most part of brain. Second point, hindbrain में 3 part आता है. Number 1 is pons. What is the literal meaning of pons? The pons means breeze. Breeze means what? Breeze का काम क्या है? कनेक्ट करना. तो सोचिए पॉन्स का फंक्शन क्या है? ब्रीच. किस के बीच में ब्रीज का काम करता है? राइट, इंटरकनेक्ट.
cerebrum is a part of the forebrain and hindbrain. Forebrain. And cerebellum, part of hind. मेन फंक्शन आपको समझ में आ गया कि ये किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, फोरब्रेन के साथ हाइंड ब्रेन को कनेक्ट कर रहा है. एंड सेकंड फंक्शन, मेनली तो ये इंटरकनेक्ट करता है फोरब्रेन के साथ हाइंड ब्रेन, बट आल्सो दैट कनेक्ट और इंटरकनेक्ट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. तो ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन को ये इंटरकनेक्ट भी करता है. बट द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन वी आर डिस्कस्ड इन द रेस्पिरेशन चैप्टर. इट व्हाट, किसको रेगुलेट करता है, याद है ना? हाउ दे अल्टर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, बाय मींस ऑफ व्हाट, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का फंक्शन को मॉडरेट करेगा, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन को डिक्रीज करेगा, सो द रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल अल्टर. So it moderates the respiratory rhythm center by decreasing the duration of inspiration. By decreasing the duration of inspiration, thereby alter the rate of respiration. ये था पॉन्स के बारे में, ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना, एकदम टू द पॉइंट. नंबर 2, सेरिबेलम. देखो लिटरली सेरिबेलम का मीन क्या है, मीनिंग से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा. सेरिबेलम मीन्स लिटिल सेरेब्रम. Cerebellum means little cerebrum. So we can say it is the largest part, the second largest part. Because cerebrum the largest, a little cerebrum. So it must be the second largest part of brain. Okay. Cerebellum mostly ये कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज. कभी कभी एक रेयर क्वेश्चन पूछता है, क्या है? अगर क्वेश्चन पूछे कि सेरिबेलम among from the reptile, birds, mammals, amphibians, cerebellum सबसे well developed and largest किसका है? बोलिए. Largest cerebellum is found in which of the following? Mammals, birds, reptile, amphibians. Cerebellum directly associated with what? Parency. ट्रिक्स से आंसर निकलता है, मैं बार बार बोलता हूं, बस वो ट्रिक्स को पकड़ना है. क्योंकि सेरिबेलम बैलेंस करता है मेंटेन अलोंग विद द इंटरनल ईयर. हम लोग पढ़े हो
Internal ear is also concerned with what na? Hearing and equilibrium both. So equilibrium is concerned with that is cerebellum plus internal ear. And birds, they has to maintain their balance in the air very frequently. And that is why the largest in what numbers? देखिए सेरिबेलम का 3 पार्ट है. The 2 part is called cerebellar cortex. Sorry, cerebellar hemisphere. And one part is called hermes. So यहाँ पे 3 पार्ट हो गया cerebellum का. 2 is cerebellar cortex and another is what? Nerve hermes. जैसे ब्रेन में क्या था? ब्रेन में क्या था? सेरिबेलर हेमिस्फीयर की सेरिब्रल हेमिस्फीयर. यहाँ पे क्या हो गया? सेरिबेलर हेमिस्फीयर. यहाँ पे था सेरिब्रल, यहाँ पे हो गया सेरिबेलर. Now, just like brain, you are also made up of cortex and medulla. So cerebellar cortex, just like brain, it should be made up of white matter or gray matter. Brain में क्या होता है? Internally white matter, externally gray matter. तो यहाँ पे external कौन है? Cortex. तो cortex यहाँ पे क्या हो जाएगा? White हो जाएगा या gray हो जाएगा? Gray. And internally क्या हो जाएगा? White matter. लेकिन स्पाइनल कट जब आएगा रिवर्स हो जाएगा. स्पाइनल कट में रिवर्स हो जाएगा, आउटर हो जाएगा व्हाइट, इनर हो जाएगा ग्रे. कहीं पे भी ब्रेन का पार्ट होगा तो आउटर ग्रे एंड इनर व्हाइट. नाउ वर्मिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली द median worm like. मैं आपको डायग्राम करके दिखाऊंगा हाउ इट इज median worm like. कंटिन्यू करिए.
This is actually the cerebral hemisphere. ये मैं cerebral hemisphere का एक मीडियन सेक्शन आपको दिखा रहा हूं, तो एक हाफ आपको दिख रहा है। ऐसे सोचिए दो हाफ है, हमने एक हाफ को ऐसे मीडियन ही डिवाइड करके दिखा रहे हैं। तो हाउ मेनी सेरेब्रल हेमिस्फीयर विल बी देयर? टू, है कि नहीं? दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में क्या होगा? वर्मिस। टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर विथ वन वर्मिस। हम यहां से ऐसे मीडियन ही सेक्शन कर दिए एंड वी आर लुकिंग दिस वन। So this is one half of the cerebral hemisphere. This is the vermis, median worm leg. दिखा आपको? सेरेब्रल हेमिस्फीयर में आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज आर्बर विटे। आर्बर विटे क्या हुआ? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हाँ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट। So arbor vitae, as you can see, it is called as tree of life. Why it is called as tree? Because of the branching structure. अब देखिए जो आर्बर विटे को हम लोग ट्री इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रांच्ड है, एंड ब्रांच्ड इज व्हाई ना, बिकॉज ऑफ सेवरल फोल्डिंग। एंड ये फोल्डिंग किससे बना है? ना फॉर्म्ड ऑफ बोथ व्हाइट एंड ग्रे मैटर। ये क्वेश्चन रहेगा, ये आर्बर विटे इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर और ओनली ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ग्रे मैटर बोथ। Although it is a part of medulla, आप देख सकते हैं आर्बर विटे मेडुला में प्रेजेंट है, लेकिन मेडुला में सिर्फ व्हाइट नहीं है यहाँ पे। It is the folding of the gray matter and white matter. That is why it is the question which is normally confused. आर्बर विटे ट्री ऑफ लाइफ तो वो समझ में आ जाता है, but it is formed of only not white matter, although it is made up of white and gray matter both. Now the next one, this is called as the choroid plexus. This choroid plexus in concert with the secretion of cerebrospinal fluid. The CSF is secreted from the choroid plexus, and यहाँ पे exactly इस पोजीशन में यहाँ पे ऐसे मिड ब्रेन होगा, जब हम लोग डायग्राम बना रहे थे अभी ऐसे मिड ब्रेन, इस पोजीशन में ये मिड ब्रेन हो जाएगा। कर्पुरा क्वाड्रिजेमिना का लोकेशन, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करिए। Complete. So moving to the next phase. Complete सिर्फ ना? ठीक। Now cerebellar hemisphere, cerebellum contain three bundle of myelinated nerve fiber. Three bundle of myelinated nerve fiber. याद करिए, bundle of nerve fiber is called as what? Not tract. याद है? But ये CNS नहीं है. Sorry, I'm sorry. ये
forebrain तो नहीं है, but hindbrain है. Still, it is a part of CNS, so it will be also called as what? Like tract. Definition याद है ना? Tract and nuclei. Tract का definition क्या था? A bundle of nerve fiber in the CNS is called as tract, and the collection of different neuron is called as nuclei. So cerebellum contains 3 tract called cerebellar pedunculus. Number 1, superior cerebellar pedunculus. Superior cerebellar pedunculus, it actually connect cerebellum with midbrain. देखिए ऊपर में हो गया मिड ब्रेन. अगर आप ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको सही तरीके से याद है तो ऊपर हो गया मिड ब्रेन, एंड सेरिबेलम के नीचे क्या है? पॉन्स फेरोली मेडुला ऑब्लांगेटा स्पाइनल कॉर्ड. सो हियर सुपीरियर cerebellar pedunculus that connect the cerebellum with midbrain. Number 2, middle cerebellar pedunculus that connect cerebellum with pons, and inferior cerebellar pedunculus that connect cerebellum with medulla and spinal cord. Completed. Now we are coming to the function of cerebellum. Mostly it is associated with the voluntary activities, or it is associated with the involuntary activities. Involuntary activities. So number 1, it modulate or reorganize the motor command. ये सिर्फ मॉड्यूलेट करता है, रीऑर्गेनाइज करता है. क्या मोटर कमांड को ये इनिशिएट करता है? एंड हु इज एक्चुअली इनिशिएट द मोटर कमांड? मोटर कमांड को इनिशिएट कौन करता था? मोटर एरिया प्रेजेंट इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. याद करिए, पढ़े थे सेंसर एरिया, मोटर एरिया, एसोसिएशन एरिया. सो इट only modulate and reorganize the motor command. That is, it control the voluntary muscles activity. Or coordination. And यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, it is initiated by motor area of forebrain. It is initiated by the motor area of forebrain or cerebrum.
याद रखिए वॉल्यूंटरी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन और उस मोटर फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम, लेकिन इसको इनिशिएट कौन करता है ना, सेरेब्रम। नंबर 2, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप घर में है, सडनली लाइट चला गया घर में, तो घर का जो कंडीशंस है, घर का जो कहाँ पे दरवाजा है, कहाँ पे खिड़की है, कहाँ पे मैंने चार्जिंग लाइट रखा था, कहाँ पे मैंने मोबाइल रखा था, तो आप लोग एक अंदाजा लगा के वहां तक पहुंच जाते हैं कि नहीं। अगर आपका ये रोड विलेज का रोड है या तो आपके गली चौराहा का रोड है, बहुत ही नोन रोड है, तो आपको पता है कि किस में कहाँ पे हम लोग को टर्न लेना है और कहाँ पे हम से कहाँ पे गड्ढा है। And that is called as what na, conscious effort and unconscious direction. Unconscious direction is controlled by the cerebellum. Conscious instruction is, that is what provided by the cerebrum. And ये दोनों का joint activity से काम हो जाता है. Write the second point. Cerebellum's unconscious direction and cerebrum's conscious instruction determine when and how to move body part. Number 3, control rapid muscular activity. देखिए हम लोग राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। लिखने के टाइम में आप लोग स्लो लिखते हैं, जब मैं स्लो बुला रहा हूं, अगर हम फास्ट लिखेंगे तो आपका भी ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका टाइपिंग हो गया, राइटिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, एवरीथिंग विच इज ऑलरेडी लर्न फ्रॉम व्हाट ना पास्ट। लिखना, बोलना, ये सब जो चीज है, ये वॉलंटरी एक्टिविटी, सॉरी इट इज ए व्हाट ना, a kind of activity in burn key, that is a kind of activity which is being learned at an early stage. So those activity which is being learned at early stage to be rapid muscular activity controlled under the cerebellum. जैसे कि हम बोल रहे हैं, control the rapid muscular activity like running, typing, flying in case of birds, etc. Number 4, the activities of cerebellum. The activities of cerebellum are involuntary. Very, very important. The activities of the cerebellum are involuntary, but may involve learning at early or early life. तो अर्ली स्टेज पे आप इसको लर्न किए हैं, तभी उसको आप इनवॉल्यूंटरली कंट्रोल कर रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि जितने भी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी है सब लर्न है, सब बाय बर्थ।
So all the involuntary activity which are learning at a particular stage are to be under the control of what? This cerebellum. And that is why ये जो flying हो गया, typing हो गया, running हो गया, tucking हो गया, ये आप fast भी कर सकते हैं, slow भी कर सकते हैं. तो ये जितने भी activity ये सब क्या है? Rapid and slow movement. It is ultimately involuntary, but all are learned at early stage. So these are the functions related with the cerebellum. I think आपको complete control ये समझ में आ गया कैसे control होता है. Next we are coming to the last part of the hindbrain, that is medulla. It actually connect different part of brain with spinal cord. What is the opening through which the brain is or the medulla oblongata is communicate with the spinal cord? Foramen magnum. So it communicates with spinal cord through foramen magnum. अब लोकोमोशन चैप्टर में इसके बारे में देख लिए थे. डायरेक्टली हम लोग उसका फंक्शन में आते हैं. इट कंट्रोल और it is with vasomotor center. vasomotor center मैंने अभी आपको बोला था क्या है? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर प्लस कार्डियोवास्कुलर सेंटर. Respiratory rhythm center and cardiovascular center together we called as vasomotor center plus gastric center, coughing center, vomiting center, and sneezing center. तो मैं टोटल आपको हाइपोथैलेमस में कौन सा सेंटर है, थैलेमस में कौन सा सेंटर है, थैलेमस में कौन सा सेंटर है? रिले सेंटर. हाइपोथैलेमस में क्या हो गया? हार्मोन रेगुलेटरी सेंटर. और क्या था? हंगर, थर्स्ट, सैटिस्फैक्शन. मेडुला में क्या हो गया? रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रिक, कॉफिंग, वॉमिटिंग एंड स्नीजिंग. कंपल्सरी क्या है जो आपके एनसीईआरटी में दिया है? हार्मोन रेगुलेशन, रेस्पिरेटरी रिदम, कार्डियोवास्कुलर, वॉमिटिंग. गैस्ट्रिक दिया है कहां पे? डाइजेशन चैप्टर. ठीक है, चलिए. So we are now coming to the brain stem. Brain stem is actually the structure which is made up of क्या है? मिडब्रेन एंड हाइंडब्रेन.
बट हाइंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? ओनली pons and medulla. Cerebellum including brainstem or excluding brainstem? Excluded. So midbrain, pons, medulla togetherly called as brainstem. बाकी एनसीईआरटी में एक ब्रेन का डायग्राम दिया होगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और मीडियन सेक्शन. उस डायग्राम में कहाँ पे क्या है वो आपको आइडेंटिफाई करके रखना है. मिड ब्रेन कहाँ पे है, हाइंड ब्रेन पॉन्स कहाँ पे है, सेरिबेलम कहाँ पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन क्या है, हाइपोथैलेमस कौन सा है, ब्रेन वेंट्रिकल क्या है, वो देख लेना है आपको. कंप्लीट. चले आगे. मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा ब्रेन का, उसमें हमको देखना है कि ब्रेन वेंट्रिकल कहाँ पे. वेट फॉर ए मिनट. जितना फास्ट हो सके. जितना जल्दी हो सके डायग्राम.
यहाँ पे मैं खाली इतना ही इंडिकेट करूंगा जितना हम लोग को ब्रेन वेंट्रिकल स्टोर करने के लिए चाहिए मेन। बाकी मैं थोड़ा बहुत देखा भी दूंगा कहाँ पे क्या है। ये एंटीरियर साइड है कि नहीं? फ्रंट साइड जो है वो एंटीरियर साइड है, जिस साइड में सेरिबेलम है वो क्या है? पोस्टीरियर साइड। दिस इज एक्चुअली कॉर्पस कैलोसम। दिस इज cerebrum, that is cerebral hemisphere. Now, this is thalamus. मैं एनसीईआरटी का डायग्राम को फॉलो कर रहा हूँ। This is hypothalamus. हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होगा? पिट्यूटरी। This is midbrain. This space which is present is called as paraciole. Paraciole actually फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल को मिला के बोलते हैं। डायनसेफेलॉन में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज डायनसेफेलॉन में जो स्पेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज डायस्टेम और थर्ड वेंट्रिकल। जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है वो क्वेश्चन अभी आ गया। द कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन connection which is present between the metaciole, that is fourth ventricle, and third ventricle, that is diastole. इतना पूछेगा नहीं, सीधा पूछेगा which of the following is present near the midbrain. midbrain के नजदीक कौन है ना? ये है आपका सेकेंड वेंट्रिकल, ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज सेरेब्रल एक्यूडक्ट और आइटर। क्या बोलते हैं उसको? ये एनसीईआरटी का लाइन है। सेरेब्रल एक्यूडक्ट और आइटर प्रेजेंट नियर द मिडब्रेन कनेक्टिंग व्हाट एंड व्हाट? थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सेरेब्रल एक्यूडक्ट otherwise called as iter. मैं डिटेल्स बाद में लिखूंगा। And there is another connection which is present in between
द पैरासियल एंड डायसियल एंड दैट कनेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा शेड कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि किस चीज को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अंदाजा लगाने के लिए आपको शेड कर देता हूँ इस पर्सन। ये जो पोर्शन है जहाँ पे कनेक्टेड है, किसके साथ किसका कनेक्शन है? पैरासियल एलोंग विथ डायसियल। दिख रहा है आपको? पैरासियल एंड डायसियल के बीच में कनेक्शन जो है, दैट कनेक्शन इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ, क्या है? फोरामेन ऑफ मनरो। क्या बोलते हैं उसको? फोरामेन ऑफ मनरो। इसीलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए तीन चीज आएगा, फोरामेन ऑफ मैजेंडी, फोरामेन ऑफ मनरो, फोरामेन ऑफ मैग्नम। काफी है कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को काफी है। इसीलिए ध्यान रखिए, फोरामेन ऑफ मनरो, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन द पैरासियल एंड डायसियल, whereas iter is a connection between the diacial and metacial। एंड सेरिबेलम का डायग्राम मैं ऑलरेडी वहां पे कर चुका हूं, इसलिए खाली इंडिकेट कर देता हूं कि ये सेरिबेलम है। दिस इज pons, दिस इज medulla and this is to spinal cord। और डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, इट्स एनफ। डायग्राम इतना ही काफी है। कंप्लीट है क्या? आपके पास बुक है ना, एनसीईआरटी बुक? स्टडी मैट तो है ना? निकालिए, उसी में एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि वो डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, और उस डायग्राम को थोड़ा सा लाइटली मत लीजिएगा, थोड़ा सा सीरियसली लीजिए उस डायग्राम को। गिवन डायग्राम प्रेजेंट इन योर बुक, और एनसीईआरटी जो भी एसएएम डायग्राम दिया है, ब्रेन का इंटरनल डायग्राम दिया है, मिला? मिला? वही डायग्राम एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम है, और उसमें उसका लोकेशन देख लीजिए। ये थैलामस का लोकेशन क्या है, मिड ब्रेन का लोकेशन क्या है, पर्परा क्वाड्रिजेमिना का लोकेशन क्या है, और सिर्फ आपको क्या क्या इंडिकेट किया है? मेनली इट इज इंडिकेटेड some of the common structures like thalamus। कहाँ पे दिख रहा है थैलामस? उसके नीचे हो गया कौन सा? हाइपोथैलेमस। देन pons cerebellum and medulla तो समझ में आ रहा है। देखिए सेरिब्रल एक्यूडक्ट दिया है, आप सोचेंगे सेरिब्रल एक्यूडक्ट तो बहुत हाईफाइड है, एनसीईआरटी में नहीं है। सेरिब्रल एक्यूडक्ट इज गिवन इन द एनसीईआरटी, एंड कहाँ पे उसका लोकेशन है? देखिए, जस्ट प्रेजेंट एट द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पास में ही सेरिब्रल एक्यूडक्ट है कि नहीं? एंड इट इज इंटरकनेक्टिंग व्हाट ना, थर्ड विथ फोर्थ वेंट्रिकल। इसीलिए क्वेश्चन मिलता है। So I'm coming to the next topic, brain matrix। और श्योर so brain ventricle is actually the fluid filled space, and that fluid is CSF। कौन secrete करता है CSF? Choroid plexus।
4 brain ventricle is actually 4. First, second, third, and fourth. First and second ventricle, otherwise called as paracule. Location कहाँ पे है ना cerebral hemisphere. Third ventricle, which is also called diastole, present कहाँ पे है ना diencephalon. Fourth ventricle present in the medulla, present in that is also called as metaciole, present in medulla. Now, foramen of Monroe, in between paracule and diastole. Iter or cerebral aqueduct, in between diastole and metaciole. याद रखिए, very important, present near midbrain. Next, two lateral foramen and one median foramen. Lateral foramen को हम लोग बोलते हैं that is foramen of Laska, and the median is called as foramen of Mazzenti. So lateral is called as foramen Laska, and median is called as foramen of Mazzenti. टोटल कितना फोरामेन हो गया ना 3, 2 lateral and 1 median. ये दोनों मिलके ये तीनों मिलके ये कनेक्ट करते हैं मेटासियोल एंड subarachnoid स्पेस. याद करिए, आप लोग पढ़े थे कि subarachnoid स्पेस इज द स्पेस इन बिटवीन द pia mater and arachnoid membrane. याद है? And it is present outside the brain or inside the brain? Outside the brain. And outside the brain, the subarachnoid space is a fluid filled cavity filled with CSF. हमने वहां पे बताया था कि ब्रेन के अंदर CSF secrete होता है. But how it is possible that the CSF is coming out of the brain? Because subarachnoid space is not present in the brain. It is out of the brain. ब्रेन के बाहर है. तो ब्रेन के अंदर जो CSF secrete होता है वो बाहर कैसे आता है? By means of the 3 opening. क्या है? The 2 lateral opening and 1 median opening. So 2 lateral opening and 2 median opening
which connecting the fourth ventricle of medulla के साथ किसको कनेक्ट करते हैं? Arachnoid space. That is why through this opening the CSF is coming out of the brain. There is no connection of the metacial with subdural space. इसीलिए subdural space क्या था? Air field था. Clear है?